Now, 5 BJP MLAs were suspended after a scuffle broke out between TMC and the BJP MLAs in West Bengal Assembly. BJP now claims that MLAs were assaulted by TMC. TMC MLAs were they assaulted many of those BJP legislators. That's the allegation that's been made, and all this happened only because BJP leaders demanded for a discussion on Birbhum massacre on the floor of the House. BJP MLA Manoj Tigga was allegedly manhandled during the incident. A video that was tweeted by BJP now shows an MLA accusing other MLAs of pushing him and tearing down his shirt. TMC MLA Asit Majumdar was quick to counter these claims, saying that he sustained injuries during the ruckus. He says that Suvendu Adhikari punched him in the face. 5 BJP MLAs have now been suspended, including Suvendu Adhikari, Manoj Tigga, Nararahari Mahato, Shankar Ghosh, Deepak Bharman were suspended for their alleged involvement in a scuffle inside the Bengal Assembly. And following this ruckus, BJP MPs from West Bengal now are holding protests right outside the Assembly at the Gandhi statue in the Parliament against the attack on party's MLAs inside the Bengal Assembly. This ruckus erupted in the Bengal Assembly on the last day of the budget session. Unfortunately, instead of a constructive debate or discussion, this was reduced to a fist fight. बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर। इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। मार्च में सब एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटन कंप्लेंट टू द स्पीकर। जो आपका आंख का सामने ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग किया है उसका खिलाफ हाउस का जो रूल है, रूल के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। সিকিউরিটিদের মারছিল, তাদের ঠেকাতে গিয়েছিলাম। শুভেন্দু অধিকারী নিজে আমাকে ঘুষি মেরেছে। আচ্ছা, শুভেন্দু অধিকারী নিজে ঘুষি মেরেছে। আমাদের সিকিউরিটিদের মারছিল, আমি হাত জোর করে বারণ করতে গেছি। শুভেন্দু নিজে ঘুষি মারলো, আমার চশমা ভেঙে দিয়েছে। দেখুন, এই দেখুন চশমা ভেঙে দিয়েছে। देखिए, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में आज जो घटना घटी वो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली घटना है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अंदर जहाँ पे हाउस बैठता है उसके अंदर इस तरीके का घटना हम लोगों ने कभी पहले नहीं देखा। जिस तरीके से बीजेपी विधायकों के ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया गया, उन लोगों को, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, तो इस तरीके की घटना प्रमाण करता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बोलिए, डेमोक्रेसी बोलिए, कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री का हम लोग यहाँ पर विवृत्ति चाह रहे थे। जो घटना घटा रामपुर हाट में, हम लोग स्पीकर को बोल रहे थे, लेकिन टीएमसी के कुछ गुंडा विधायक आकर के सब मेरा शर्ट ये सब छीट दिया। यहाँ पर हमको धक्का मारा, घूसी मारा। ये सब देखिए, मेरा ये सब हम लोग का गणतांत्रिक पद्धति से हम लोग अंदर में बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री का विवृत्ति चाहिए, लेकिन हठात टीएमसी का कुछ विधायक आकर के मुझे कान करके ये सब हमारा सब साथ छीट दिया, घुसी मारा। This is the intolerant mindset of the Trinamool Congress and the West Bengal government. Whether it is the entire state of West Bengal or whether it is the West Bengal Assembly, there has been a complete politicization of institutions and a complete institutionalization of political violence under Mamata Banerjee. All right, let's cut across to our reporter on ground, Indrajit Kundu, joining us live from Kolkata. Indrajit, such ugly, embarrassing scenes of elected representatives coming down to blows inside the Bengal Assembly. And the reason was that they wanted to discuss Birbhum massacre. What happened after that? We know that 5 of the BJP MLAs have been suspended. What does the BJP now plan to do? Well, Lamina, it was the last day of the Bengal budget session in the Assembly. And as expected, there was ruckus because it has been going on for the past several days. In fact, the opposition BJP and its MLAs have been walking out of the Assembly over various issues, most prominently, of course, the Birbhum massacre, the Rampur Hat case. And it was no different today. What the BJP wanted was a discussion on the floor of the House. They have been demanding that the Chief Minister come and speak on the floor of the House over this entire incident. And they did the same today. But while they were demanding, they came out on the well
protesting and demanding that there should be a discussion. There was a ruckus and a scuffle that broke out between Trinamool Congress and BJP MLAs, and several people got injured. We've seen visuals of how Trinamool Congress MLA Ashit Majumdar, his nose got injured and he was rushed to the hospital. The BJP claims that its chief whip Manoj Tigga, he was also assaulted by Trinamool Congress Trinamool Congress MLAs. We've heard the speaker now. He has suspended 5 BJP MLAs, including leader of opposition Suvendu Adhikari. The speaker spoke to us and he said that there hasn't been any official communication from the opposition parties right now, that is the BJP, over any assaults or any injury from their side. But he claimed 15 to 16 people have been injured, and there are some, assembly staff also who have been injured. The BJP, of course, not willing to relent. And at 2 o'clock this afternoon, just short while from now, the BJP is going to take out a protest march. It was a pre-scheduled protest march on the Rampur Hat incident, where all BJP MLAs, including Suvendu Adhikari, along with BJP State President Dr. Scuffle Majumdar, will be taking to the street here in Kolkata in protest against what has happened in Rampur Hat and, of course, what has unfolded in the assembly this morning. Inderjit, thank you very much. This is, of course, very embarrassing in West Bengal Assembly, inside the Assembly. While during the session, you see MLAs there from both ends of TMC and BJP entering a fist fight, absolute scuffle that's taken place. And we hear the BJP now accusing West Bengal government of absolute lawlessness. Let's hear it from Dilip Ghosh, who spoke on this. बंगाल में जो घटना घट रही है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है और विपक्ष का जिम्मेदारी ये बात को उठाना, चाहे सदन के अंदर हो चाहे बाहर। अगर चर्चा के लिए अगर डिमांड करते हैं स्पीकर के सामने कि विधानसभा चल रहा है, वहाँ चर्चा हो इसका ऊपर, इसलिए उनका ऊपर अटैक किया जाए, उनको शारीरिक रूप से मारपीट किया जाए, घायल किया जाए। मैं तो गोवा में हूँ, शपथ ग्रहण में था, अभी खबर आया कि भयंकर हालत हमारे LOP जो अपोजिशन लीडर है, हमारे चीफ व्हिप है, इन सारे लोगों को मारा गया और हमको मारपीट किया, हमारे 5 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। तो सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके जबरदस्ती सरकार चलानी चाहती है वहाँ, उसका अगर हम विरोध करते हैं विपक्ष के नाते, हमारे ऊपर शारीरिक आक्रमण किया जाएगा, ये कौन सा लोकतंत्र है? विधानसभा के अंदर भी नहीं है लोकतंत्र, बाहर भी नहीं है। तो ये सरकार एकदम विफल हो चुकी है, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है और विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए शारीरिक निग्रह कर रहा है।